stated that we are going to cover the all subjects that was in the syllabus of the MPADPO. So today we are starting with the explosive acts. Okay, so you know there are 18 sections that we are going to study. So let's start. So Explosive Act 1884. It is an act that covers, or basically, why this act has legislated, because it have to cover the or regulate the manufacturing, possession, यूज सेल ऑफ द एक्सप्लोसिव्स. मतलब आप एक्सप्लोसिव को कैसे यूज़ करते हैं. आप जानते हैं कि RDX जो भी ताज हमला हुआ था, जो भी ये सब कितनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, कितना ज़्यादा डेंजरस होता है. तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करेगी, इसलिए इन्होंने ये लॉ बनाया है. और अगर यूज़ भी होता है ये कहीं, एनीवेयर इट इज़ यूजिंग, then who can have the license, how it can be supplied, how it's supply one to another, and how the companies making it, how they are handling this explosives, are to be addressed by the rules and regulations or act. So it is very important to understand, that is why this act has been legislated. So first of all, uh, if you have read it, or if you do not read it, do not worry, I am going to complete this. First of all, this is too easy because they are certain and too much. For ADPO, I have a strategy, everyone have a strategy, but you should be mindful, because there are certain acts, there are too many acts, but what happened, there are too many acts, there are 5 units. So from one unit there are 20 questions have to come, but 20 question in a unit, there are different and so many laws, bare acts. So if you are giving important to
all, and you are just memorizing and understanding each, and try to remember each and every section aspect, then you are doing the in or wrong way. Your preparation is heading towards wrong way. So what is important, it is important to understand what is important. I think you first read all subjects, at least explosive, like example explosive act, you just read it once, and understand what is the mean, like who can explosive act. Before that we have completed the what I say, I just forget. Okay, in explosive act, who can control? Uh, Before that, we have we have completed the uh, Preventive Detention Act. Okay, where there are both governments are capable of giving the detainment order, whether it is central government or state government. State government, even though delegated its power to district magistrate or the commissioner of police, but explosive act, there is a sole government. Who is government? Central government is sole government. Anything you see, who is the government pertaining to orders, making rules, if this question has come in exam. So you should be mindful that explosive act were handled by the central government. So it is like, means you cannot remember everything, you cannot be that, maybe some of you may be the smartest guy, but you cannot remember everything at once. So it is very important to understand what it takes and how you are approaching the exam. That is why the people say that go and watch and analyze the past year question papers, and according to that prepare a strategy. But here is a catch, because there these exams are not happening in regular 1 year gap, 2 year gap. Okay, so you do not have enough material to understand the logic, to analyze the pattern. But at least you have something. There are two papers that were recent in 2016 one, and there is a 2021. So you have a basic idea, from that you can get the basic idea, but you have to prepare yourself. So it is an act to regulate the manufacturing, possession, use, who is using it, who is selling it. Like in Diwali's, explosive were used. There are certain patakas that have a more power. So, what is the who is transporting, by which vehicle it is transporting? If you are importing from the other nations, if you are exporting from India, so what these things, and who can regulate? So, and who can get the license, where to get a license? These things were codified by the legislature. So first of all, we are going to read it. First, it is a short title. It is saying that it may be called the Explosive Act 1884, extend to whole India, commencement जब से होगा, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई करेगी. फिर section number third is repealed. Section number fourth says what is the definition of aircraft, meaning any machine which can derive support in the atmosphere from a reaction of the air other than the reaction of the air against the earth's surface, and includes balloons, whether fixed or free, airship, kites, glider, and flying machines. So what is this? Is a very important definition, my friend, because explosive, in explosive act, balloon is also the aircraft. So basically it is a very, balloons, kites, these things were non harm, they cannot harm you, but these are in categories of aircraft. Nowadays, what happened recently, maybe you do not follow the uh, news.
and to protect oneself. Nowadays you do not I mean, in this era, in this present circumstances, it is better to avoid news. But I just wanted to tell you that recently Russia have developed a missile. Okay. I mean, they have a very they have a missile too long ago. It is too old missile, but now they have modified it, and modified it that if the aircraft has launched missile away from the target like 40-50 meters or 100 200 1 kilometer 200 kilometers away from the target, because aircrafts are safe from there, and now the missile can glide over, because it have two verticals, like punk whatever I say, vertical horizontal extensions, that the missile can glide 300-400 meters 1 kilometers and reach the target. That is why here is gliders are in the aircraft. So aircraft means here aircraft means the balloons, whether it is fixed or not, uh, fixed or free, uh, airships, kites, gliders and flying machine. Okay, let's see the carriage. Carriage include any carriage, wagon, car, truck, vehicle, or any means of conveying goods or passengers by land in whatever manner the same may be propelled. Carriage means you understand, कुछ भी हो अगर लैंड पे चल रहा है और कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दैट वुड कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कैरेज. पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो आप जानते ही हैं. In relation to area for which a commissioner of police has been appointed means the commissioner of police therein includes. ये तो कुछ और ही बोल रहा है. Any said deputy commissioner of police exercising jurisdiction over the whole or any part of such area as may be specified by the state government in this behalf in relation to such area or part. मतलब वही होगा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी हम लोग कभी कभी मान लेंगे ऐसा. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आ सकता है इसमें. ठीक. डी एक्सप्लोसिव क्या होता है, उसकी डिफिनीशन किस में है, 4D में है. मीन्स अ गन पाउडर. तो अगर आप यूजिंग कर रहे हैं, कोई भी गन पाउडर यूज कर रहे हैं, तो दैट वुड ऑल्सो काउंट एज एक्सप्लोसिव्स. नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोफिन, I mean here are a lot of things, you can read it. Okay, gun cotton, dinitrotoluene, trinitrotoluene, pyric acid and so many things. Okay. Export means you know what is the basic export. You are exporting from India, means you are taking any goods and services to giving to other nation. Importing means from other nation you are bringing the goods inside the India. Here is master manufacturing. In a master in relation to any vessel or aircraft, you know the master. Master, you know, understand. uh, Captain in ships we call it. You already have watched, many of you have watched the clips or movie of Jack Sparrow. So who is the captain of Jack Sparrow? Who is the captain of ship? I mean, who is the master of ship? Captain. Okay, so master you have to remember from captain. Who is the owner? I mean, not owner. Who is in charge of that carrier or ship? Okay. मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एन एक्सप्लोसिव इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ. तो मैन्युफैक्चर इसमें बता रहा है कि अगर आप एक्सप्लोसिव का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होंगी. तो डिवाइडिंग द एक्सप्लोसिव इनटू कंपोनेंट्स पार्ट और अदरवाइज ब्रेकिंग अप. आप उसको तोड़ते हैं या बनाते हैं या फिर जोड़ते हैं, या फिर किसी मेकिंग फिट फॉर यूज़ एनी डैमेज्ड एक्सप्लोसिव. अगर कोई डैमेज्ड एक्सप्लोसिव है तो आप उसको ऐसे बना देते हैं उसमें कुछ रिपेयरिंग करके कि ये यूज़ किया जा सकता है इन फ्यूचर. तो ये सब आएगा. ठीक.
रीमेकिंग, अल्टरिंग और रिपेयरिंग द एक्सप्लोसिव आ गया कि आप उसको दोबारा बना रहे हैं। एक बार वो फूट चुका है या फिर उससे कुछ हो चुका है, जैसे गन पाउडर है तो आपने गन पाउडर इकट्ठा कर ली, फिर दोबारा आप कुछ बना रहे हैं उससे। ठीक। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब रूल्स। Vessel include everything: boat, ship, sailing vessel, other description of vessel used in navigation, and all that. So, section number 5 is saying that power to make rules as to licensing of the manufacturer, possession, use, sale, transport, import, and export. So, who can make the rules and regulate the licensing of manufacturing, uh, possession, use, sale, and transport, import, and export? So, center government has a power. Exclusive act, if there is question who is responsible, government, appropriate government, you can close your eyes and tick center government. सो हियर फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया, या तो आप किसी पार्ट के लिए बना सकते हैं या किसी उसके लिए, मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट टू रेगुलेट और प्रोहिबिट एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड एज प्रोवाइडेड बाय दोज रूल्स द मैन्युफैक्चरर, पोजेसन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव्स। तो वही बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर सब कुछ करने के लिए वही रूल्स बनाइए। रूल्स अंडर दिस सेक्शन में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एमंग्स। तो किस चीज़ पे रूल्स बन सकते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं कि 5 सब क्लॉज 2 में क्या बता रहा है। पहला तो बाई अथॉरिटी, जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, या फिर अथॉरिटी जो आपको लाइसेंस देगी, द अथॉरिटी बाई विच लाइसेंस में बी ग्रांटेड, द फीस कितनी चार्ज होगी और एक्सपेंसेस कितने लग जाएंगे एप्लीकेशन में, किस मैनर में आप एप्लीकेशन को जमा करेंगे, एंड क्या क्या मैटर या पर्टिकुलर्स आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म होंगे, क्या कंडीशंस होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी किसी भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस लेने का, जैसे आपको 18 ईयर मेजर होना ज़रूरी है, द पीरियड फॉर विच द लाइसेंस इज ग्रांटेड, या फिर किस पीरियड के लिए, हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम द लाइसेंस हैज़ बिन ग्रांटेड टू यू। these are conditions on which the central government has power to make the rules. Okay, you can see, read it, there is nothing. Okay, the total quantity of explosives that a license can purchase, this is like the fees to be charged by chief controller of explosives or any officers for service rendered in connection with manufacture, transport, import or export. So it is very easy, you just read it, there are things related to explosive. So 5A, person already in business in, it is saying that before the commencement of this act, okay, if any person has been engaged in the explosive business, exporting, manufacturing, so they are exempted from this act or rules. For how much time? If they do not have license and they are engaged before commencement, so they have the time period, that in which time period they have to apply for the license and get the license done. So first is that for a period of 3 months from the date of such commencement, जब से, अगर आप वो पहले से इंगेज हैं, तो जिस दिन से ये एक्ट कमेंसमेंट में आता है, इफेक्ट में आता है, उससे 3 मंथ्स के भीतर उनको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो ये माना जाएगा कि जब तक जो भी पीरियड है, या 3 मंथ्स का पीरियड लेटर होगा, या फिर उसका जो अप्लीकेशन का जो भी वो होगा, क्या कहते हैं, फाइनल डिस्पोजन तक के लिए, वो आर दिस this manufacturer or licensee are free. I can read it for you. If before the expiry of the said period of 3 months बीत जाते हैं, उन्होंने अप्लाई कर दिया, such person has make an application for grant of license under this act for such business in such explosive until the final disposal of his application whichever is later.
तो उसमें यही बोल रहा है कि जो भी टाइम पीरियड होगा वो हु इज़ लॉन्गर पीरियड, कौन लास्ट में ख़त्म हो रहा है। अगर उसने 3 मंथ्स के भीतर अप्लाई किया एप्लीकेशन, ही मेड एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एंड his application was pending there, so he is free to carry his business. Okay, let's see the section number 6. Power for central government to prohibit the manufacture, possession or importation of especially dangerous explosive. Here it is saying that the central government has a power to prohibit any manufacturing, any transportation, possession, importing of any especially dangerous explosives like RDX and so many categories of this. Okay, तो इसने यही बोल दिया, इसमें कुछ है नहीं वैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम रेगुलेट कर सकती है। और अगर वो रेगुलेट करती है तो जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी एक्सप्लोसिव्स, तो उसमें क्या होगा, कस्टम्स एक्ट भी अप्लीकेबल होगा। फिर लेट्स सी दिस 6A, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, possession, sale or transport are explosive by young person and certain other person notwithstanding anything in the foregoing provision of this act. So I already have tell you that who can get the license, the power to make eligibility criteria, who can make, central government can make that these person, eligible person or having these conditions will only get or are able to apply for the license of for explosives. So 6 is saying that prohibiting it, just prohibit that no minor or below the age of 18 can get the license for the explosives. I can read it for you. 6A, 6A, section number 6A, clause A, no person who has not completed the age of 18 years, तो यहाँ पे क्लियर हो गया who has। और यहाँ पे फिर इसने यहाँ पे इसमें क्या है कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस कि सम पर्सन हैज कन्विक्टेड फॉर डूइंग सम हार्म, और वो एंड ही इज कन्विक्टेड, सो फ्रॉम कन्विक्शन and continuing from conviction, he will not be given the license of explosives for 5 years. I can read it for you. Who has been sentenced of conviction of any offense involving violence or moral turpitude, turpitude, okay, sorry, moral turpitude or violence. If someone is engaged in moral turpitude and violence फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब कि ये होगा कि कोई भी अगर पर्सन, पहले तो वो 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, दूसरा ये कि अगर वो पर्सन कोई भी वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस के भीतर आ गया है, और उसमें जो ऑफेंस उसका कन्विक्शन हुआ है 6 मंथ से ज़्यादा का हुआ है, तो उसको, उससे क्या है, 5 ईयर्स जब सेंटेंस उसका ख़त्म होगा, ठीक, उससे 5 ईयर्स तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर मैं हूँ, मैंने कोई वॉलेंस कर दिया है और मुझे 7 मंथ्स की सज़ा होती है, तो मेरे 7 मंथ्स की सज़ा तक कट जाएगी, उससे 5 साल बाद मैं एलिजिबल हूँगा लाइसेंस लेने के लिए। इफ़ you have any doubt and any feedback, you can comment below that I'm not understanding this part. I just try to be more clarify, and uh, if you have any suggestions, you can also put some suggestions on the comment box. I will surely think about what I can do better for you. So let's see the third. It is simply that and the who cannot get the uh, license, who has filled the bond for keeping the peace or keeping the good behavior. So fourth one is those license under the, or fourth one is saying that
If you get a license but you have revoked, or you do not follow the certain what I say, certain rules, okay, or provisions of this act at any time during a period of 5 years from the date of cancellation of such license. तो अगर आपने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किया, आपको लाइसेंस मिल गया था, फिर आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, तो कैंसिलेशन से 5 years तक आपको दोबारा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. मैन्युफैक्चर, सेल्स, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सप्लोसिव. Possession any such explosive as the central government may have in regard to the nature thereof by notification in the official gazette specify कि आप कैसे purchase करेंगे, what are the conditions of it. So no person shall sell, deliver or dispatch an explosive to a person whom he knows or has reason to be believe at the time of such sale, delivery or dispatch to be prohibited under clause A to manufacturing, sale, transport, import, export or possession explosive to be of unsound mind. So here it is also putting the accountability on the licensee that you do not sell the explosives to one you believe or reasons to have belief that he will use for bad intentions or he is not capable, like do not sell these explosives to minor below the age of 18 years who have these conditions, above condition, prohibited conditions 6a, who comes into category of the section 6a, or person of unsound mind. You do not sell to them. It is your responsibility. Understand? Let's see the section number 6b, grant of license. So whenever a person will I mean, whenever a person made application to the licensing authority for getting the license, so what is the procedure? It is saying that where a person make an application for license under section 5, the authority prescribed in the rules made under, so सेक्शन 5 के अंदर अगर कोई भी वो कर रहा है, ठीक, सेक्शन 5 के अंदर में सेक्शन 5 इज देयर and his eligibility criteria, okay. सो अगर वह कुछ भी हो रहा है, उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया सेक्शन 5, अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस हेयरिन आफ्टर रेफर टू दिस एक्ट after making such inquiry if any as it may be considered necessary shall subject to the other provision of this act by order in writing either grant the license or refuse to grant the same. The licensing authority shall grant a license where it is required for the purpose of manufacturing of explosives. The licensing authority is satisfied that the person by whom license is required possesses technical know-how and experience in the manufacture of explosive, has in his employment or undertakes to employ a person or person possessing such technical know-how and experience where it is requisite for any other person. If the licensing authority is satisfied that the person by whom license is required has a good reason for obtaining the same. So here is saying कि आप ग्रांट ऑफ लाइसेंस कब करेंगे, आपके पास whenever you made application for the oh no, for made an application to licensing authority, the licensing authority may naturally do an inquiry, and if he is satisfied that you are fulfilling these conditions that I have read, then he will grant you the license. If he is not satisfied, he will simply reject. Let's see the section C. Refusal of license, notwithstanding anything contained in section 6b, licensing authorities shall refuse to grant a license where such लाइसेंस इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोहिबिटेड एक्सक्लूसिव, मतलब कोई भी प्रोहिबिटेड एक्सक्लूसिव के लिए आप अगर लाइसेंस मांगने आए हैं तो आपको नहीं मिलेगा. वेयर सच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय पर्सन होम लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव prohibited by this act
और कोई अदर लॉ एक्ट, जैसे कोई माइनर चला गया, ठीक, टू बी अनसाउंड माइंड उसको नहीं देगा, टू बी एनी रीजन अनफिट फॉर द लाइसेंस अगर, और इसमें एक चीज़ ये भी बोली गई है कि और उसको ये भी लगेगा कि इंक्वायरी करता है और वो उसको लगता है कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए अगर नहीं देना जरूरी है तो नहीं देगा। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ करता है, ठीक, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज इफ रिफ्यूजिंग यू लाइसेंस ही विल furnish you some okay, I mean he gives you the written statement why is not giving you the license, okay। तो यही बोल रहा है कि दिस सेक्शन इज सिंपली सेइंग दैट कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिफ्यूज़ करता है लाइसेंसिंग और अगर आप डिमांड करते हैं वाई तो ही विल गेट यू, लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तब छोड़ के, ठीक। 6D पढ़ते हैं अपन, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कम्पिटेंट टू इम्पोज कंडीशंस इन एडिशन टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस। मतलब 6D ये बोल रहा है कि अगर वो लाइसेंस आपको देना चाहता है, आप कुछ फुलफिल कर रहे हैं बट उसने इंक्वायरी किया और ही विल नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर राइट पर्सन टू गिव द लाइसेंस ऑफ एक्सक्लूसिव, दैट यू हैव अ टेक्निकल नो हाउ, okay, know how the things, how you will how will you can handle this explosive or how you are manufacturing. But you have given the undertaking that I will employ these people who know the technical know how of this explosive. Then he may put some condition that first you employ and then I will give you license, and certain other conditions he may like, okay। 6C वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो किसी भी टाइम पे वेरिएट कर दे जो भी उसने कंडीशंस लगाई है, या सस्पेंड कर दे उसे अगर ऐसा लगता है, या रिवोक ही कर दे। तो इसमें उसने पावर दिया है, दीज थिंग्स हैव। इसमें आप कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, वेरी इजी। कंडीशंस इस मैं ही पढ़ देता हूँ, चलिए, बिकॉज I know not have anybody have too much time. The licensing authority may vary the conditions subject to the which a license has been granted, except such of them as have been prescribed, and may for the purpose of require to holder of license by notice in writing to deliver up the license to at such a time as may। इसमें सिंपली ये बोल रहा है कि वो नोटिस दे सकता है कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसको लाइसेंस दिया है कि आप डिलीवर कर दे लाइसेंस, ठीक। दूसरा ये बोल रहा है कि द लाइसेंस मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑल्सो वेरी द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एक्सेप्ट सच ऑफ देम हैज बीन प्रिस्क्राइब। और अगर कोई कंडीशंस उसने रखी है तो बाद में वो वेरिएट कर दे सकता है कंडीशंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ होल्डर, ठीक। licensing authority may by order in writing suspend a license for such a period as things fit और revoke a license। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रिवोक कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है। रिवोक कब कर सकता है कि जब रिवोक कर सकता है कि जब उसको लग जाए कि जो जिसको उसने होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है, वो प्रोहिबिटेड था बाय लॉ और किसी अदर लॉ के अंडर में, या फिर वो अनसाउंड का माइंड था, या फिर अनफिट है था लाइसेंस के लिए। दूसरा ये था कि सिक्योरिटी या पब्लिक पीस के लिए खतरा हो गया है, तो सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ये थर्ड बोल रहा है कि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लिया गया है वो क्या है कि कोई भी मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करके लिया गया है, तब वो रिवोक कर सकता है, ठीक। और डी इसका बोल रहा है कि लाइसेंस हैज़ बीन कॉन्ट्रावेंटेड, कि जो भी कंडीशंस थी उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। इफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 रिक्वायरिंग हिम टू डिलीवर अप द लाइसेंस। तो 6E में हमने सबसेक्शन 1 में सबसे पहले पढ़ा कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो नोटिस देगा इन राइटिंग कि आप लाइसेंस होल्डर को कि आप जमा कर दीजिए, ठीक।
लेकिन अगर वो उसको फॉलो कंप्लायंस कंप्लायंस नहीं करता तब ये ऐसा होगा, ठीक। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑल्सो रिवोक लाइसेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर देयर ऑफ, कि अगर जो होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है, वो खुद अगर अप्लाई कर देता है कि मेरा लाइसेंस आप वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, सस्पेंड कर दीजिए, देन ऑल्सो ही विल सस्पेंड। फिर 5 पढ़ लेते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेक्स एन ऑर्डर वेरिंग द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1 और ऑर्डर सस्पेंडिंग और रिवोकिंग a license under subsection 3 it shall record in writing the reasons thereof and furnish to the holder of the license on demand a brief statement of the same unless any case of the licensing authority is of opinion that it will not be in public interest। मतलब फिफ्थ यही बोल रहा है कि अगर आप सबसेक्शन 1 में या 3 में आप रिवोक करते हैं किसी का लाइसेंस, तो आप राइटिंग में लिखेंगे, ब्रीफ में। और अगर वो पर्सन जो लाइसेंस होल्डर है वो मांगता है कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड यू आर कैंसलिंग और रिवोकिंग माई लाइसेंस, देन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में प्रोवाइड द सेम। सिक्स से बोल रहा है कि द कोर्ट कन्विक्टिंग कर दिए रहा है लाइसेंस से। अगर कोई लाइसेंस होल्डर है और ही इज़ कन्विक्टेड फ्रॉम द कोर्ट, ठीक, तो उसमें क्या है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है, ठीक। और यहाँ पे एक वो भी दे दिया है कि एक्सप्लेनेशन कि अगर वो अपील में सेट असाइड हो जाता है उसका जो भी कन्विक्शन ऑर्डर है, या फिर फ्री हो जाता है, ठीक ना, रिलीज्ड हो जाता है, सो वहाँ पे वो जो सस्पेंशन ऑर्डर था या रिवोकिंग ऑर्डर ऑफ लाइसेंस था वो वाइड हो जाएगा। सेवन पढ़ते हैं कि सस्पेंशन और रिवोकेशन अंडर 6 में ऑल्सो भी मेड एन अपीलेट कोर्ट बाई और हाई कोर्ट व्हेन, मतलब यही बोल रहे हैं कि अगर कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपका कन्विक्शन के आधार पे वो कर दिया है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक। एट्थ बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट सस्पेंड रिवोक डायरेक्ट एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू सस्पेंड रिवोक ऑल और एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट थ्रू आउट इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोले कि इस एरिया के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दो या फिर इस पर्सन के कर दो, ठीक, ये चीज़ है। ऑन द सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस अंडर दिस एक्शन the holder thereof shall without delay surrender the license to the authority by whom it has been suspended revoked to has authority has में भी मतलब इसमें यही बोल रहा है कि अगर आपका सस्पेंड हो गया, रिवोक हो रहा, तो यू शुड सरेंडर और एक्सपोज टू द अथॉरिटीज हैज़ बिन डायरेक्टेड, ओके। फिर 6F अपील बोल रहा है, ठीक, इसी को कंप्लीट करते हैं, फिर वी कैन देन वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके। 6F बोल रहा है कि अपील, एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू ग्रांट अ लाइसेंस वेरिंग द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सस्पेंडिंग revoking a license may prefer an appeal against the order to such an authorities अपीलेट अथॉरिटी जो इस एक्ट में बताया गया है विद इन सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें यही बोल रहा है कि आप किसी के भी पास जा सकते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर में बनाया है सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में, टाइम पीरियड, टाइम लिमिटेशन। नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ इट इज़ प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, यही बोल रहा है कि अगर एक्सपायरी, अगर कोई भी टाइम पीरियड बताया गया है कि अगर 90 डेज़ के अंदर में आपको अपील फाइल करनी है बट यू हैव एक्सीडेड दैट टाइम पीरियड और आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, तो एडमिट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीजंस है देन इट विल अपीलेट अथॉरिटी इफ सेटिस्फाइड देन दे विल एडमिट इट, इफ नॉट दे विल डिसमिस रिजेक्ट योर अपील। थर्ड इज द थर्ड यही बोल रहा है कि लिमिटेशन एक्ट 1961 विल अप्लाई, कंप्यूटेशन मतलब पीरियड का जो कंप्यूट करने के लिए। फिर फोर्थ इज एवरी अपील अंडर दिस section shall be made by petition in writing and shall be accompanied by a brief statement of reason of for order appeal against where such statement has been furnished to appellant and by such fee as may be prescribed।
मतलब ये बोल रहा है कि सब कुछ भी ब्रीफ में होना चाहिए और फीस भी होनी चाहिए। इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील अपीलेट अथॉरिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर में भी प्रिस्क्राइब। और यही बोल रहा है कि जो अपीलेट अथॉरिटी होगा उसको भी कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। और इसमें ये भी बोल रहा है कि आप कोई भी अपील सिंपली डिसमिस नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट गिव सम अपॉर्चुनिटी टू दी license holder. Okay, then the order appealed against shall, unless the appellate authority conditionally or unconditionally direct otherwise, be in a force pending the disposal of the appeal against such order. तो ये बोल रहा है कि अगर अपीलेट कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया है तो आपका जो भी ऑर्डर था अब licensing authority का, that will continue in the force. Every order of the appellate authority confirming, modify, reversing the order appealed against shall be final. मतलब ये बोल रहा है कि जो भी appellate authority का वो होगा, क्या कहते हैं, ऑर्डर, that is final and after that there is no litigation. So we will continue with the section number 7 tomorrow. Thank you so much for here.